होगा, तो आगे डायरेक्शन है। So, पर रिव्यू का कोई क्राइटेरिया है हमारे पास? बिल्कुल, लाइक डू वी नो ऑफ एनी स्टडी वेयर द रिव्यू हैज बीन डन प्रॉपर्ली, सो वी कैन से कि एज पर दैट स्टडी आप ये रिव्यू को बोलिए और स्टेज को बोलिए। एनी मैकेनिज्म एफॉर्म ऑडिट का तो सिपा ने किया हुआ है राजस्थान का, बहुत बढ़िया है। रिपोर्ट बनाया क्या सिपल का है ना, एक यहाँ दिल्ली में भी 6 जिलों में किए थे ना हम लोग, नहीं वो पुणे पे दी और No, don't go into that. No, because we have to see how we want the review. Otherwise, they just give information. No, just information is not possible. But we have to start the mechanism. That is already part of their mechanism. No need of something which are launching. It is already there. It is part of their duty. You're not saying something outside. No, but you have to do. F form में कोई फॉर्म पूरा भरा है कि नहीं देखना, कुछ लोगों ने कंसोलिडेटेड दिया है, कुछ लोगों ने भरा ही नहीं है, जैसे बिहार में रिपोर्ट ही नहीं किया है। अब ये भी हो सकता है पूरा का पूरा ठीक हो। रिव्यू का मतलब है रिव्यू का मतलब पूरा का पूरा ठीक होने के बावजूद भी मिस्टेक्स होगा कहीं पर, जैसे महाराष्ट्र में सब ठीक दिखेगा, लेकिन सब प्रेग्नेंट औरतें एक ही लेन से आ रही है, एक ही लेन में सब प्रेग्नेंट औरतें नहीं हो सकती, एड्रेस गलत है। Exactly. So that, but how we have to give them a mechanism. So whatever they have, like this form. yeah. See, when we also go to any district, we ask the appropriate authority to show us few forms, let us review and see. So often what we see, there is no signature of the pregnant women. Declaration part is empty. Like we went and saw in one district. ये जैसे इसमें सिग्नेचर पूरा डिटेल्स लिखा है, सिग्नेचर नहीं है प्रेग्नेंट पेशेंट का, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो सोनोग्राफी कर रहा है उस डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है। Signature नहीं है उसका। It's a violation of 10(1)(a). It's a violation of section 5. Sometimes they are not writing male and female gender in science. These are all. I'm getting all that. All I'm saying is that we should be able to give a very clear. We should be able to tell the court to give a very clear direction. Yes. So if when we are saying exactly you are right. Review and the format so reviewed meaning that they are complete or incomplete. Then the analysis. I have seen the like for example how she said कि महाराष्ट्र के फॉर्म्स सारे ठीक है, They are given wrong. लेकिन वो एड्रेस एक ही जगह का है. So unless an analysis is not done, वो ठीक है में आके क्लोज हो जाएगा ना चैप्टर. See, there are two things what we have been observing. Form F is coming and getting dumped. They are not doing because it's a mandatory to give form F. Appropriate authority also takes it, they are not reviewing. There are very few states who have started putting in soft copy. District wise they have started to put it in the soft copy. Otherwise there is no use of those form F. They are never reviewed. They are just coming, they are dumping. मुझे क्या लगता है कि एटलीस्ट 1 साल का रिव्यू मांगेंगे एफ फॉर्म का, 1 साल में पूरा देश में एफ फॉर्म के साथ कितना सोनोग्राफी हुआ और एफ फॉर्म में क्या हुआ मांगेंगे, तो फिर कोर्ट में आने के लिए बोलेंगे तो भी एक प्रेशर बन सकता है, और बनाना चाहिए, डालना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट के पास आएंगे तो एविडेंस के बिना तो नहीं आएंगे। ये चीज हमने जब किया था ना मध्य प्रदेश के पीएल के दौरान में जब किया था, शुक्री से जो निकल कर आए थे वो यही था कि हमको मांगना पड़ेगा कि उन्होंने क्या मॉनिटर किया है। We have to ask on a form F. EFG I think soft copy F ना, we are asking F. GF को तो है ही नहीं पता नहीं FG आ रहा है उसके बाद Other we have to no review of provided data. don't write DEF only F no G तो only F. जी सिर्फ टेक्निक का है, हम गलती से कहीं मध्य प्रदेश का ये गड़बड़ी है, जी लिख रहा है, जी का कोई समझ नहीं है। Under the in the last 1 year, in the last 1 year, 1 year बहुत हो गया उनके लिए भी, 1 year भी बड़ी बात है। throughout the country. ये सॉफ्ट कॉपी फाइल हो जाए ऑनलाइन, इट्स वेरी इजी. एड्रेस दैट यू आर टॉकिंग ऑफ, इफ यू जस्ट टाइप इन 1 कॉलम एड्रेस, उसमें सपोज 50 फॉर्म उसी लेन से आ रहा है, इट इमीडिएटली थ्रू.
So guys, when we talk of review, when we talk of a hard copy review, I think what we should request the court is for No, it is already in the custody of the appropriate That's authority right. right now. This is now, and I'm saying going forward, it should be, because that's the easiest way when you do an MIS system, whereby you type, if you have, say, suppose in one particular that you were talking about, that particular pin code may or that particular lane, if it will come up 15, then it immediately flags that, okay, fine, how is it Yes, possible it that has so only many one people are state, there? but So I think that should be the way forward for easy audit and effective audit. ठीक है, ऐसे करना। State of Gujarat is already doing. They have to file this hard copy as well as online. See, but those We have. Okay, so Even we have. so don't you feel there is some No online तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा How you find See, and like she had pointed out earlier also, ना, कि there are practical difficulties. कहीं electricity नहीं है, road shedding हो रही है, all of that. both copies ना hard copies are Let it be. Let them read whatever they bring. it is easy to analyze. Whatever they do. It is Let easy them to do it on analyze. online or offline. If they ask them, That is in addition to that is as per the states. जैसे झारखंड में अभी शुरुआत है तो वहाँ पर No, ऑनलाइन no, they are not saying that they are not to file hard copies. In addition to that, as she's mentioned, it's easy to analyze. Easy analysis. Let them analyze in whatever they want to analyze it. Already it is with them. They have not done anything out of it. Whereas they have to find it out what is happening with it and they have to file the cases. And- which they have not done. And So we are sometimes asking to do that exercise. in some time also what's happening, the practitioner they say inadvertently it happened. अगर फॉर्म एक में कुछ कॉलम छूट जाता है इमीडिएटली उनका फॉर्म आगे जाएगा ही टेक्निकली नहीं वो बात की बात है। आज हम किस बात का कर रहे हैं? नहीं जाएगा नहीं आज cannot be. It cannot आज अभी तो एनालिसिस नहीं हम in addition to that